Okay, so today I have to discuss on optical isomerism. Okay, that is also called as mirror image isomerism. Okay, so already you know optical isomerism means what in the organic chemistry. Are you know? In organic chemistry, you know that is there must be three type of things you have to learn. That is enantiomer, diastereomer, homomer. Okay, so there must be in enantiomer, that is a mirror image relationship. Okay, and never be superimposable. आप कोई भी एक स्ट्रक्चर उठाकर दूसरे स्ट्रक्चर में आप दे दो तो वो अगर क्या होता है शेप साइज सबसे एकदम मैच हो जाता है, एक के ऊपर एक आप गिरा दो तो वो एकदम टोटली मैच हो जाता है. जैसे आपका सोचो आपका ये जो फिंगर है, ठीक है, तो यहाँ पर ही दूसरा एक फिंगर एक हैंड लेकर ऐसे, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम सुपर इम्पॉसिबल बोलते हैं. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? सुपर इम्पॉसिबल. एक के ऊपर एक हो जाता है. पर सोचो यहाँ पर आपका फिंगर ऐसे है, ठीक है, फिंगर अच्छे से नहीं हुआ जो भी हो, और दूसरा ऐसा आपका फिंगर है, तो वो सुपर इम्पॉसिबल नहीं है. पर इसको अगर आप मिरर इमेज कंसीडर करो तो ये मिरर इमेज हो सकता है. हाउ? this this यहाँ पर एक मिरर इमेज रिलेशनशिप होगा. तो ये जो दोनों हाथ है इसको हम क्या बोल सकते हैं? एनांशियोमर. दिस इज कॉल्ड एज एनांशियोमर. दिस इज कॉल्ड एज एनांशियोमर. And you better call this relationship is called as mirror image relationship because one is mirror to other. Okay, one is mirror image to other. Okay, इसको हम क्या बोल सकते हैं? या एनांशियोमर बोल सकते हैं. और इसको हम क्या बोल सकते हैं? होमोमर बोल सकते हैं, क्योंकि एक के ऊपर एक बैठ सकता है. ठीक है, फर्स्ट वाला जो है, सॉरी, इसमें बैठ नहीं सकता है. रुको, दिस तो इसके ऊपर इस ये जो ब्लू वाला और रेड वाला दे शुड बी सुपर इम्पोसिबल, बिकॉज ब्लू के ऊपर रेड और रेड के ऊपर ब्लू आप बैठा सकते हो. तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? होमोमर. और इसको आप बैठा नहीं सकते हो. अगर आप इसको आप ग्रीन वाला को यहाँ पर रखो तो ऐसा होगा, वो सुपर इम्पोसिबल नहीं होगा. ठीक है, पर मिरर इमेज होगा. तो दैट इज कॉल्ड एनांशियोमर. ओके, एंड लास्ट वन जो बैठा भी नहीं सकता, एक के ऊपर एक आप बैठा भी नहीं सकते हो, एज अ सुपर इम्पॉसिबल नहीं होगा. नो सुपर इम्पॉसिबल इज देयर एंड नो मिरर इमेज रिलेशनशिप इज देयर. देन यू हैव टू से दिस टू फॉर्म आर डायस्टेरोमर. ओके, नाउ there must be the question arises, this is okay ma'am, this is are basically based on organic chemistry, so why we telling about this in the inorganic chemistry, or that is cohesion compound, right? But remember that there must be the concept almost similar. आपका optical isomerism, that means there must be mirror image relationship. There must be actually the two form are exhibit as an enantiomer, and these two enantiomer are both are optically active. आपका जो एनांशियोमर होता था वो ऑप्टिकली एक्टिव होता था या नहीं होता था? बोलो. एज ए कार्बोहाइड्रेट, एज ए amino acid exhibit, normal amino acid exhibit as L form, but D form can also be permissible. Okay, so this L form and D form both are optically active. Why? Because having chiral center. Chiral center means what? Chiral center means having the 4 defined groups. Right? Clear? This is the basic knowledge. Okay. Similarly, in carbohydrate, most carbohydrate, all natural carbohydrate are basically D form. D glucose, D mannose, D fructose, D sucrose, that's it. But they can exhibit as L form. Okay. Right. In the artificially we can prepare. Okay. So this D form and L form are correspondingly enantiomer. Right. Right. So that means what? एनांशियोमर हो सकता है कभी कहीं आपका बहुत सारा OH हो तो वहाँ पर थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा एनांशियोमर हो रहा है या डायस्टेरोमर हो रहा है, RR हो रहा है या RS हो रहा है या R
आर या आर एस हो रहा है या एस एस हो रहा है, तो वो आपको प्रेडिक्ट करना है, वो अलग बात है। वो डीपर में अब जब जाओगे तब सब समझ जाओगे कि आपका कार्बोहाइड्रेट जो केमिस्ट्री है वो बहुत बहुत बड़ा केमिस्ट्री है, वहाँ पर बहुत कुछ आपको याद रखना है, ठीक है। तो वो अलग बात है। तो ये सोचो आपका एनर्शियोमार क्या है, राइट। तो देयर मस्ट बी एक्चुअली दिस टू फॉर्म, दिस टू एनर्शियोमार, एक्चुअली दे आर having almost similar chemical property, almost having same type of things, but they are not identical, okay। वो दो चीज़ एक नहीं है। जो ट्विन देखते हो आप, कहीं पर ना कहीं पर तो ट्विन देखे हो, ऐसा बहुत ट्विन होता है जो अलग अलग दिखते हैं, वो ठीक है, वो आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि कौन सा ढोल कौन सा क्या है, ठीक है। पर सोचो जो एक ही जैसा दिखते हैं तो यू कैन नॉट आइडेंटिफाई इजीली, ओके। जैसे आपका छोटा भीम अगर आप देखते हो तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है ढोलू भोलू। तो यू नेवर आइडेंटिफाई हु वन इज़ ढोलू, हु वन इज़ भोलू, इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। मैं बचपन से आज तक छोटा भीम देखते रहती हूँ, पर आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हु वन इज़ ढोलू, हु वन इज़ भोलू। सो दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, okay। So this time things also happen for enantiomer, but actually they are not same, they are different. Dholu bhalu, the two person are not same, they are different, okay। So this is the thing, and that's why this due to this two form we get the additional some pairs of isomer, okay। And these additional isomers are called as optical isomers because they have optical activity, they have chirality, and they rotate the plane polarized light, okay, clear। And obviously they are mirror image relationship, that means mirror image to each other. So that's why this isomerism can also be called as mirror image isomerism, okay। सो वाई दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट, आपका जो क्वेश्चन आएगा सो वो हर वक्त ऐसा नहीं होता है कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से ही क्वेश्चन आता है, या फिर आपका जो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का जो मैंने पैटर्न किया है वहाँ से आता है, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कितना सारा ऑप्टिकल आइसोमर है वो प्रेडिक्ट करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है। कभी कभी आपको आता है टोटल आइसोमर, so on that total isomer you have to count also the optical isomer also, because their option eliminating is very important. Sometimes if you ignore this optical isomer, maybe your option will be incorrect, okay। आपका ऑप्शन देख देख कर आपको सोचना है कैसे कैसे आपको बोला जा रहा है, वहाँ पर सिर्फ जियोमेट्रिकल कंसिडर किया है या फिर लिंकेज वो स्ट्रक्चर कंसिडर किया है, या फिर वहाँ पर आपका टोटल मतलब ऑप्टिकल आइसोमर लेकर कंसिडर किया है, वो आपका ऑप्शन भी देखना है, ठीक है, ओके। नाउ optical isomer or enantiomer are pair of molecule or ions, maybe molecule maybe ion। why ions, suppose why ion, क्यों आयन बोला जा रहा है? देखो यहाँ पर देखो, ये दोनों आइसोमर है, पर यहाँ पर 2+ है, यहाँ पर 2+ है, दैट मीन्स दे आर कैटायन, and cation we say as also ion, so ion can also show mirror image relationship। यहाँ पर देखो 2- है, 2- है, यहाँ पर भी 2- होगा, ठीक है। तो ये एनायन है, तो दिस 2 anion शो ऑल्सो मिरर इमेज रिलेशनशिप, but here there is no ion, there must be 0 charge, that means the neutral complex show this mirror image relationship। So that means positive negative both ions as well as neutral complex all can show mirror image relationship, okay। So that's why there is said that is molecules and also ions, that means cations and anions both, but if you call as a general way, so there must be you can say as a ion, okay। ion मतलब cation anion both होता है, ठीक है। आपका जब जेंडर लिखा होता है वहाँ पर देखना मेल फीमेल अदर ये सब लिखा होता है, तो आप मेल फीमेल अदर वो बोलकर भी आप जेंडर स्पेसिफाई कर सकते हो, या फिर किसी और जगह में आपका जेंडर मेंशन भी नहीं होता है, ठीक है। आपका नेम सोचकर ही लोग समझ जाता है आप क्या हो, ज़्यादातर केस में नेम ऐसा होता है कि वो फीमेल या मेल है समझ जाते हैं लोग, पर कुछ कुछ एक्सेप्शनल नेम होता है जहाँ पर हम समझ नहीं पाते कि वो फीमेल है या फीमेल है, वो अलग बात है, ठीक है। जैसे आपका कुछ कुछ बंगाली में कुछ कुछ नेम होता है जहाँ पर ए टर्म होता है, तो बहुत लोगों को पता नहीं होता है इंग्लिश टर्म में वो फीमेल है या मेल है, ऐसा हो सकता है, वो काफ़ी अलग बात है। पर जो जनरलाइज्ड वे होता है,
जैसे और भी अच्छे से बोलो क्या बोलूँ, ऐसे एज फॉर एग्जाम्पल यू मे बी कैटेगरी फॉर्म केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, फार्मा, और भी जितना सारा साइंस का सब्जेक्ट होता है वो आपका स्पेसिफिकेशन होता है ना, पर एक्चुअली यू आर जनरलाइज्ड एज ए साइंस कैटेगरी। ओके, तो आपका ऐसा भी हो सकता है, कहीं पर भी आपको ये पूछ सकता है आप कौन सा सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, तो ऑन दैट से यू हैव टू से दैट इज केमिस्ट्री और फिजिक्स जो भी हो। एंड समटाइम्स मेनी पीपल से व्हिच स्ट्रीम यू बिलोंग फॉर। ओके, कौन सा स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हो, तो ऑन दैट केस यू मे हैव टू से दैट इज साइंस। तो दैट मीन्स साइंस इज अ जनरलाइज्ड वे, okay, on that time, because science represent all the subject and this subject is a specific way on that case। okay, तो this is the thing on that case, that is आप आयन भी बोल सकते हो या फिर कैटायन आयन अलग से भी बोल सकते हो, पर चीज़ एक ही है। ठीक है, कैटायन आयन्स आयन्स के अंदर में ही होता है। ठीक है, तो दैट इज सो। तो ऑप्टिकल आइसोमर और एनांशियोमर आर पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयन्स व्हिच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल। दे आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल। नॉन सुपर इम्पोजर मतलब क्या बोला, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ अगर बैठ सकता है, पूरा बैठ सकता है, मतलब कोई भी अलग जैसा नहीं लगता है, तो तब उसको हम बोलते हैं सुपर इम्पोसिबल। और सुपर इम्पोसिबल जब भी कोई स्ट्रक्चर दो स्ट्रक्चर जब भी कोई दो स्ट्रक्चर सुपर इम्पोसिबल होगा वो आइडेंटिकल होगा, उसको हम बोलते हैं होमोमर। वो एक्चुअली दो फॉर्म के जैसा एग्जिस्ट नहीं करता है, वो एक्चुअली एक ही फॉर्म है। ओके, when the two structure are superimposable to each other, they actually are the same form. They are not the belonging the different thing, they are actually same. Okay, so they are called as homomer. They never showing the optical isomerism property. Optical isomerism property can also be shown by enantiomer who are having the mirror image relationship along with non-superimposable structure. Okay. Okay, now the question is square planar complex. First I deal with square planar complex, because square planar complex, you know, there must be suppose copper, there must be NH3 and NH3 and NH3 is there. Maybe you can change this NH3 के जगह आप Cl दे दो, यहाँ पर Br दे दो, यहाँ पर I दे दो, आप ग्रुप चेंज कर सकते हो, 4 ग्रुप कर सकते हो, पर यहाँ पर एक प्लेन क्या होता है, कट हो जाता है, सबको कट करके चला जाता है। द प्लेन पासिंग थ्रू द ऑल द एटम्स इन द स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस। दैट्स वाई in square planar complexes there must be no optical activity, no optical isomerism can be shown. Okay, but mostly okay, so that means what, आफ्टर आपका जो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है देन मोस्टली नेवर शोइंग एनी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टीज। ओके, नेवर शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, बट देयर मस्ट बी सम एक्सेप्शन आल्सो देयर। ओके, एक्सेप्शन तो हर जगह होता है, हर वक्त होता है। तो देयर मस्ट बी, इफ यू सपोज द लिगेंड यू हैव टू चूज इन विच द सम ग्रुप दैट शुड बी अबव एंड बिलो ऑफ द प्लेन ऑफ द स्क्वायर प्लेन। ओके, स्क्वायर प्लानर का जो प्लेन होता है वहाँ पर कोई अबव और बिलो द प्लेन अगर आपका कोई ग्रुप हो जाए और वो ग्रुप का कोई डिफरेंस आप दे दो, तो वहाँ पर हो सकता है आपका कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। जैसे आपका यहाँ पर CH3 है, सोचो यहाँ पर अबव द प्लेन CH3, बिलो द प्लेन CH3। ठीक है, यहाँ पर अबव द प्लेन H, बिलो द प्लेन PH, अबव द प्लेन H, बिलो द प्लेन PH, ऐसे ही। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है ऑन दैट केस, बिकॉज द प्लेन नेवर बाइसेक्ट द टू CH3 ग्रुप, नेवर बाइसेक्ट द H एंड PH ग्रुप। आपका प्लेन सब एटम को इक्वली कट करके क्या करेगा, दो इक्वल हाफ्स प्रोड्यूस करेगा जो एक ही जैसा होगा, पर यहाँ पर एक ही जैसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऊपर में हाइड्रोजन है, नीच में pH है। सो इफ यू सपोज there must be the plane is cutting this all the atom, this CH3 reflect this CH3, but this H never reflect to pH. Okay, so that means this form is optically active, not cutting by any sigma plane. Sorry. Okay, तो क्या होता है यहाँ पर भी सेम, so that's why they show optical isomerism. Okay, this is the first example, exception. Okay, पर neutral complex, isobutylene diamine meso stilbene diamine complex show this optical isomerism. The two form can be exhibit, they are enantiomer.
नेक्स्ट वन EDTA भी शो करता है, क्योंकि EDTA यहाँ पर सोचो, यहाँ पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर दिया, पर यहाँ पर CH2COOH के नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पर CH2COO नेगेटिव के नीचे कुछ नहीं है. दैट मीन्स दे आर नॉट मेड द इक्वल हाफ्स. आपका याद रखना, मेसो कंपाउंड क्या बोलता है, मेसो कंपाउंड को क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव सोचता है, हम लोग सोचते हैं क्यों, वाई मेसो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, बिकॉज दैट देयर मस्ट बी द सिग्मा प्लेन और प्लेन ऑफ सिमेट्री कट द मॉलिक्यूल इक्वली एंड नो इक्वली, दैट मीन्स इक्वल टाइप ऑफ टू हाफ्स. ओके, कोई भी अलग जैसा नहीं होता है. जैसे आप एप्पल को अगर आप काटोगे ठीक इन बिटवीन से, तो क्या होगा, इक्वल हाफ्स प्रोड्यूस होगा. ठीक है, तो वैसा नहीं होना चाहिए, आपका ऐसा होना चाहिए, ऐसे काट करेगा कि आपका इक्वल हाफ्स अगर प्रोड्यूस नहीं हो, तब आप बोल सकते हो कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है. फिर से बोलिए, when the plane of symmetry cut the molecule in equal half, this structure is basically optically inactive and exhibit only one form, does not exhibit plus minus or enantiomeric form. Okay, but here this CH2COO negative and CH2COO negative having no other group in the below side. Okay, so that means if you consider the plane of symmetry passing through, this plane of symmetry never produce the equal half. Okay, so that's why you get there must be an isomeric pair. Okay, clear? So there must be, you get optical isomer, these two. Okay, again there must be in tetrahedral, remember that in tetrahedral MA4, that means all groups are identical. आपका जब भी ऐसा होगा, सोचो M है, यहाँ पर A है, यहाँ पर A है, यहाँ पर A है, यहाँ पर A है. आप इसको आप रोटेट कर सकते हो ऐसे. ठीक है, रोटेट करने में क्या होता है, वो रोटेशन इतना अच्छे से होता है, आप कहीं पर भी आप प्लेन ऑफ सिमेट्री डाल दो, आपका क्या होगा, इक्वल हाफ्स प्रोड्यूस होगा. ठीक है, तो दैट मीन्स दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. ओके, ऑप्टिकली इनएक्टिव है बिकॉज प्लेन ऑफ सिमेट्री पासिंग थ्रू द सेंटर एंड मेक इट टू इक्वल हाफ्स. ओके, नेक्स्ट वन M, सपोज M A3B. So on that case M, you can put this B here, A. Okay, so there must be, if you cut the plane of symmetry, there also equal half can be you get. So this is also not optically active. Okay, similarly आप यहाँ पर और एक B ले सकते हो, वहाँ पर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा क्योंकि इक्वल हाफ हो रहा है. ठीक है, पर अगर आपका सारा ग्रुप अलग हो, सोचो M यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है, यहाँ पर D है. देखो तो कहीं पर भी आप और नहीं कर सकते हो. यहाँ पर अगर आप प्लेन दे दो तो क्या होगा, दिस B नेवर बी सेम विथ D, right? Never be same with D. So this is not a optically inactive, this is actually optically active. Okay, so that means the only form in the tetrahedral where all the groups are different are optically active. Optically active. Okay, so here also MA4 N plus minus, MA3B N plus minus, MA2B to N plus minus. Here when you passing through, suppose as for example हम फिर से दिखाते हैं. देखो M A that is MA4. Okay, M B A MA3B B A MA2B2. ओके,
So there must be, if you passes through the plane, this reflect to this, right? So optically inactive. Okay, optically inactive. There must be, if you pass through the plane, this A reflect to A. So this is also optically active. This is dot I, optically inactive. Okay, inactive. Okay, here also, if you pass through the plane of symmetry, this A reflect to this A. That is also be optically inactive. Inactive. Okay, so all are optically inactive. Okay, अगर सपोज सब ग्रुप अगर अलग कर दे A, B, C, D, on that case, if you consider there must be plane of symmetry, this B not reflect to D, this B not reflect to D, so that is must be optically active. ओके, जो प्लेन ऑफ सिमेट्री आप पास कर रहे हो, बी और डी दो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, दो डिफाइंड है, दैट्स वाई दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव. ओके, सो दैट मीन्स MA4 दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, MA3B that is also optically inactive, MA2B2 that is also be optically inactive, but only tetrahedral complex where all the groups are defined. Suppose as per example arsenic 3 plus CH3, this is A, C2H5 that is a B, and S that is C, and this C6H5COO minus this is D. All the groups are dissimilar. On that case you get this mirror image relationship. Okay. Last one, the optical isomerism in octahedral complex MA4 and MA5B are optically inactive, do not show optical isomerism. Why? See. Okay. MA6. Okay. M A A A A. Okay. If you consider there is plane of symmetry, this A reflect this A, right? So this is also optically inactive. Okay. Next one. MA5B. Suppose आपका MA5B जो होता है, आप ए कंसिडर कर सकते हो कि बी और ए चांस है, पर आप ए कंसिडर अगर करो, सोचो यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है, और आपका ए है, तो आपका तो यहाँ पर अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करे तो बी का तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, राइट? आपका ये याद होता है, आपका ये आप ए कंसिडर कर सकते हो कि बी इज नॉट रिफ्लेक्ट टू ए, but there must be the twist is there. You can cut this way also. So here this 2A reflect to this 2A, right? अगर आप यहाँ से कट करो, this BMA, these are cutted. So on that case, this A reflect to this A, this A reflect to this A. So in that way, this is optically inactive. Okay, in that way, optically inactive. अगर आप स्क्वायर प्लेन consider करो, on that case B never be reflect to A. But if you consider another sigma plane that should be cutted through BMA, so there must be this 2A in the left side and 2A in the right side are reflect to each other. That means this A5B that is also optically inactive. Okay.
never show optical isomerism. Right? So MA6 N plus minus and MA5B are optically inactive, do not show any optical isomerism. MA4B2, that is cobalt NH3 whole port Cl2. So there must be, you can form two type of complex, that is cis and trans. Okay, cis and trans. अगर आप इस cis के बारे में बोल रहे हो तो यहाँ पर आपका plane of symmetry कट हो रहा है, this. So this is never show optical isomerism, but one form can be there. This cis and trans, यहाँ पर आप geometrical isomerism ही पाओगे. Okay, there must be only the cis and trans, these two geometrical isomerism can be exhibited. Because here this plane of symmetry passes through and this NH3 and this NH3 are reflect to each other. Okay. Okay. अगर आप ट्रांस कंसिडर करो तो वहाँ पर भी ए रिफ्लेक्स ए प्लेन passes through the all NH3 and cobalt, but this Cl and this Cl are reflect to each other. So ultimately this cis and trans both are optically inactive and both never showing any optical isomerism. Only the two form can be there, that is these two form are geometrical isomerism. Geometrical isomer. Okay. So MA4B2 configuration or cobalt NH3 whole port Cl2 configuration, you can get two type of complex, that is one is cis, other is trans, and this cis and trans both due to having sigma symmetry, due to having plane of symmetry, so never show any optical isomerism, never show any optical activity. नेक्स्ट वन MA4BC सिमिलर, आप यहाँ पर भी कंसिडर कर सकते हो. दिस इज देयर आल्सो cis and trans, दिस टू टाइप ऑफ orientation can be there. If you consider there must be plane of symmetry this, so this NH3 reflect to this NH3. Okay, and if you consider there a plane of symmetry, so these two NH3 reflect to two NH3. Okay, so ultimately both are optically inactive. Next one in MA3B3, there must be FAC and MAR. These two forms are there. Okay, there you consider here the plane of symmetry, these two Cl are not identical to 2 NH3. Okay, but this plane already exists, so that's why this is optically inactive. I think FAC and MAR having optical inactivity. Okay, I will check. Okay, so there are only two form is there. MAR में भी आप देखोगे यहाँ से आप कट करोगे, आप एंगुलरली कट करो this, तो यहाँ पर ऐसे सोचो, दिस Cl कट हो रहा है, दिस NH3 कट हो रहा है, दिस Cl कट रहा है, दिस Cl कट रहा है, that way. ओके, एंड आपका जो ये जो NH3 और ये जो NH3 ये आपस में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये भी आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा. तो फैक एंड मार बोथ शो ऑप्टिकल इनएक्टिविटी. दैट मीन्स यहाँ पर भी आप फैक और मार दो टाइप का ही आप कॉन्फ़िगरेशन आप पाओगे, कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं पाओगे. सो दैट मीन्स यहाँ पर एक शॉर्टकट हो गया कि MA4B2 and MA4BC, this type of complex where cis-trans isomerism is there, so they are mostly geometrical isomerism. Only cis-trans can also only be possible because there is no plane of symmetry cutting through the, because there is plane of symmetry cutting through the molecule and cutting through the complex equal half, so that's why the complex showing optical inactivity. So there must be no mirror image relationship, no optical isomerism is there. And remember, for FAC and MAR, mostly the FAC and MAR showing optical inactivity because plane of symmetry passes through it. Okay, next one. Now MA2B2, here you see that is one optical isomerism is there. Suppose MA2B2, example that platinum NH3 whole twice, pyridine whole twice, Cl2. Suppose this A is, okay, so there one you see there must be all are cis. जब आपका सब cis होगा तब आप एक आइसोमेरिज्म आप पाओगे, मिरर इमेज रिलेशनशिप पाओगे. सो ऑन दैट केस यू गेट टू ऑप्टिकल आइसोमर. ओके, when all the groups are cis to each other, the two Cl are cis to each other, the two pyridine are cis to each other, the two NH3 are cis to each other, on that case you get this mirror image relationship, two enantiomer. Okay, and here that all the two NH3 are cis, all the pyridine are cis, but Cl are trans. Here you see
the plane of symmetry passing through it, and this Cl and this Cl reflect to each other. Here also plane of symmetry passing through it, this NH3 and NH3 reflect to each other. Here also plane of symmetry passing through it, this pyridine and this pyridine reflect to each other. Here also plane of symmetry passing through it, and this Cl and this Cl reflect to each other. So that all are optically inactive. These all are optically inactive. Okay. So never showing any optical isomerism. Okay. And ये तो आपको समझ में ही आ रहा है. यहाँ पर दो NH3 को cis और Cl को trans पकड़ा हुआ है. ठीक है. यहाँ पर दो Cl और दो pyridine को cis और NH3 को trans पकड़ा हुआ है. In that case, these two Cl are cis, two NH3 are cis, pyridine are trans to each other. Here all are trans to each other. So there must be total of 5 configuration can be there, but due to this there must be extra 2 additional form can also be exhibited. Okay, and their formula, the total isomerism formula, that is geometric isomer plus half of optical isomer. Okay, geometric isomer total 5 geometric isomer. Except this, इसको आप कंसिडर नहीं करोगे क्योंकि आपका मिरर इमेज जब होगा वो अलग से होगा. ठीक है. एक होगा सब सिस, दूसरा होगा सब ट्रांस. One is all cis, other is all trans, and next one that is 2 Cl are trans, next one 2 pyridine are trans, next one 2 NH3 is trans. So total of 5 actually. The 5 geometrical isomer can be there. That is 1, that is 2, that is 3, that is 4, and that is 5. So this is 5 geometric isomer. Okay. And additionally, due to this is optically active, so that's why due to this another form can be established, and that's why you can put this additional form as a 5 plus 1 6. Okay, or you can write this optical isomer actually the total 2 optical isomer, because this is one optical isomer, this is one optical isomer. Okay, this is A, this is B. This AB both are optical isomer. So actually 2 optical isomer can be there, but already one is already counted in the geometric isomer. एक geometric isomerism में counted हो चुका है. Okay, so that's why you have to cut this counted isomer. So that's why you have to use half of 2. So ultimately half of 2, that means what? That is 5 geometrical isomer, and this one isomer you get total of 6 isomer. Okay. Okay, can you see that is there are 5 geometrical isomer आप पा चुके. On that case you get the 5 geometrical isomer. Okay, now you have to check each and every one where the plane of symmetry cut it and where not. Okay, with respect to plane of symmetry you get optically active and optically inactive pair. Okay, now for each optically active isomer you get additional pair. Okay, and when you consider this optically active form and additionally the addition pair, so on that case there must be, you have to so first you have to check optically active or not, and for all the optically active isomer you get the additional one mirror image, right? तो आप ये भी कर सकते हो कि ऑल जियोमेट्रिक आइसोमर के साथ एडिशनल जो फॉर्म हो रहा है उसको आप प्लस करके आप टोटल बोल सकते हो, या फिर आप जियोमेट्रिकल आइसोमर अलग से और ऑप्टिकल आइसोमर अलग से करके आप टोटल जियोमेट्रिक आइसोमर प्लस हाफ ऑफ टोटल, मतलब ऑल मिरर इमेज, एक नहीं दो दो करके सब कंसिडर करके हाफ कर दो, उसके साथ जियोमेट्रिकल आइसोमर को जो ऐड कर दो तो आप क्या पाओगे? टोटल आइसोमर पाओगे. तो देयर मस्ट बी 2 वे. मे बी फर्स्ट यू हैव टू राइट ऑल द जियोमेट्रिकल आइसोमर एंड प्लस द एडिशनल मिरर इमेज which are produced. Okay, so on that case you get the total isomer. Otherwise you can do separately geometrical isomer, separately optical isomer. So first you have to write all the geometrical isomer and then you have to write half of all the 2 pair of mirror images. Okay, so ultimately you get total isomer. And last one MABCD. MABCD जो होता है वो total 15 होता है. बहुत सारा अरेंजमेंट होता है, आप कर कर के देखना 15 होता है. तो ये आप सिर्फ याद रखो क्योंकि ये ना
करने में बहुत टाइम जाता है. सो नेवर टू डू इन द एग्जाम हॉल. सो ऑलवेज रिमेंबर इन ABCD N प्लस वन, ABCD एक्चुअली ABCD नहीं, MABCDEF होगा. ठीक है, तो MABCDEF दैट मीन्स एग्जाम्पल दैट इज प्लैटिनम, pyridine, NH3, pyridine A, NH3B, NO2C, CLD, BRE and iodine F. So that means all the groups are defined in the octahedral compass. On that case you get 15 total isomerism. Okay, total isomer 15. Okay, so already I do what I say, that is in the square planar. Okay, in the square plane complex, they are mostly the square plane cutted all the atoms. So normally in the square plane complex, you never show the optical isomerism property, never show optical isomer. But there must be some exception is there. Suppose in the square plane, normal square plane, there must be, if the ligands are oriented in such a way that the two groups are present above the plane and below the plane and not identical to each other. On that case, the normal square plane never cut the equal half. Okay, never cut the equal half. On that case, square plane complexes showing optical activity. यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक पीएच है. आप जब प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करोगे तो हाइड्रोजन पीएच के साथ क्या होता है, इक्वल हाफ प्रोड्यूस नहीं करता है. ऊपर में हाइड्रोजन है, नीचे पीएच है, तो कैसे आपका इक्वल हाफ हो रहा है. अगर नीचे से आप इन बिटवीन से आप प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर रहे हो तो ऊपर में हाइड्रोजन है और नीचे पीएच है, तो दिस इज नॉट ए इक्वल हाफ. सो ऑन दैट केस you see optical isomerism. Okay, next one, tetrahedral MA4, MA3B and MA2B2, they do not show any optical isomerism. Why? Because plane of symmetry passes through and make a equal half. Already I show you. Okay, but only MABCD जो होता है, all groups are defined, तब आप optical isomerism देखोगे, because plane of symmetry never cut the equal half. प्लेन ऑफ सिमेट्री का काम क्या है, वो इक्वल हाफ में कट करेगा. ठीक है, बार बार लाइट ऑफ हो रहा है, ठीक है, सॉरी. सो वो नहीं होगा MABCD. अगर सब ग्रुप अलग हो तो तब ऑन दैट केस प्लेन ऑफ सिमेट्री इक्वल हाफ नहीं प्रोड्यूस करेगा. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स, वहाँ पर MA6 एंड MA5B, वहाँ पर ऑप्टिकल इनएक्टिविटी शो होता है, बिकॉज प्लेन ऑफ सिमेट्री पासेस थ्रू एंड मेक ए इक्वल हाफ्स, दैट्स वाई. और बाकी जो आप देखोगे MA4B2, वहाँ पर आप इंडिविजुअल आप देखोगे सीस और ट्रांस होता है, वहाँ पर भी आपका क्या होता है, इक्वल हाफ प्रोड्यूस होता है. मतलब CL के नीचे में क्या होता है, CAD होता है. ठीक है, यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर भी आपका कोई ना कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री कट कर रहा है और इक्वल हाफ प्रोड्यूस हो रहा है. यहाँ पर A प्लेन ऑफ सिमेट्री काम कर रहा है और यहाँ पर A प्लेन ऑफ सिमेट्री काम कर रहा है, पर काम तो कर रहा है. ठीक है, फैक और मार में भी आप देखोगे, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री कट कर रहा है, दिस CL रिफ्लेक्ट टू दिस CL. यहाँ पर ये सारा सिग्मा प्लेन काम कर रहा है, यहाँ पर NH3 रिफ्लेक्ट टू NH3. सो अल्टीमेटली फैक और मार ऑल्सो नेवर शोइंग एनी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. एंड लास्ट वन, आपका जब MA2B2 होगा, वहाँ पर आप बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन पाओगे, टोटल ऑफ 5 पाओगे. वहाँ पर सिर्फ सीस में आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाओगे और बाकी जो होता है वहाँ पर आप ऑप्टिकल इनएक्टिविटी पाओगे. ठीक है, और लास्ट वाला जो MABCD N प्लस माइनस, वहाँ पर आप देखोगे सब ग्रुप अलग है इन ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स. एग्जाम्पल प्लैटिनम, pyridine, NH3, NO2, CL, BRI. Here all the groups are defined, all the elements are defined in the octahedral complex. On that case, you never have to do. Total 15 isomerism can be, total 15 isomer can be there. Okay, that is geometrical as well as optical. If you count it, their total 15 will be there. Okay, okay. So यहाँ पर ही ठीक है. तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. नेक्स्ट आई विल डिस्कस अगेन अबाउट द अदर थिंग. ओके, थैंक यू. मैं बहुत भूखा था, सो दैट्स वाई ऑलरेडी आई हैविंग द प्रॉब्लम. बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, but still I have take a class. Okay, so thank you.